قطر کے دارُل حکومت دوحہ میں افغان طالبان کے امریکی حکام کے ساتھ امن کے لیے مذاکرات 22 اور 23 جنوری کو 2 روز تک جاری رہے، لیکن دوسری طرف افغانستان میں طالبان اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دن ہی دارالحکومت کابل کے قریب میدان وردک کے صدر مقام میدان شار میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک چھاؤنی پر ہونے والے حملے میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی۔ جولائی 2018 سے امریکہ اس کوشش میں ہے کہ وہ نہ صرف طالبان سے مذاکرات کریں بلکہ افغان طالبان افغان حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ طالبان پچھلے کئی ماہ میں متعدد بار امریکہ کے ساتھ ملے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن ابھی تک طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ یاد رہے طالبان نے متعدد بار افغان حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہ بننے کی یقین دہانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلاء، جنگ بندی، طالبان رہنماؤں کے نام بلیک لسٹ سے نکالنا، قیدیوں کا تبادلہ اور اعتماد کی بحالی پر زیادہ بحث ہوئی، لیکن ذرائع کے مطابق کوئی خاص پیش رفت ہو نہیں رہی۔ دوسری جانب افغان امن کونسل کے ترجمان احسان طاہری کا کہنا ہے کہ افغان حکومتی نمائندوں کے بغیر ہونے والے مذاکرات افغانستان کے امن و استحکام کے لیے بے معنی ہیں۔ اس سے پہلے یہ مذاکرات اسلام آباد میں منعقد کیے جانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اس مقصد کے لیے 4 روز تک اسلام آباد میں موجود بھی رہے، لیکن ذرائع کے مطابق طالبان نمائندوں نے یہ کہتے ہوئے اسلام آباد میں مذاکرات سے انکار کر دیا تھا کہ وہ امریکہ سے اس وقت تک بات چیت نہیں کریں گے جب تک وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکل جانے کی یقین دہانی نہیں کراتا اور اسے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اس کا اثر پاکستان پر کیا پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی معیشت اور امن و امان افغانستان کے مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر طالبان وہاں مضبوط ہوتے ہیں تو پاکستان پر اس کا براہ راست اثر پڑے گا۔ ناظرین، حکومت نے کل ہی منی بجٹ دیا اور بیلنس آف پیمنٹ کو درست کرنے کے لیے قرضے لے رہی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات قرضے اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ انہیں پاکستان سے توقعات ہیں، جن میں سے ایک طالبان کو امن مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ آج سوئٹزرلینڈ کے اندر ڈیووس کے شہر میں افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے عالمی برادری سے افغانستان کی مشکل صورتحال میں ساتھ نہ چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے افغانستان میں سے امریکی فوجیں واپس بلانے کے حوالے سے کی۔ عبداللہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک سے مطالبہ کیا کہ طالبان پر افغان حکومت سے امن مذاکرات کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ ہیں نومبر 2002 سے نومبر 2007 تک، اور ایک مصنف بھی ہیں ایک بہت ہی مشہور کتاب کے۔ ان کے ساتھ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں کابل سے نادر نادری صاحب۔ آپ جو ہیں چیئرمین ہیں انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو ریفارم اینڈ سول سروس کمیشن کے افغانستان سے، اور اس سے پہلے آپ ایک سینئر ایڈوائزر رہ چکے ہیں صدر کے پبلک اینڈ اسٹریٹجک افیئرز کے حوالے سے، اور ایمبیسڈر ایٹ لارج بھی ہیں آپ فار فریڈم آف ایکسپریشن۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے پتہ ہے نادر آپ اردو تو سمجھتے ہیں مگر اتنی اچھی طریقے سے بول نہیں سکتے، مگر ہم آپ سے پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے اردو میں بات کریں، اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا آج اپنی اردو بھی اس شو کے ذریعے بھی پریکٹس کر لیں۔ سو ویری ویری وارم ویلکم ٹو دس شو۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ جو امن مذاکرات اس وقت قطر کے اندر ہو رہے ہیں اس کے اندر افغان حکومت کہیں نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی ترجمانی نہیں ہو رہی، تو ان امن مذاکرات سے افغان لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ While we are not directly represented in Qatar or in these series of discussions of what we call it the ice breaking with Taliban, but our call for a peaceful end of this violence has been strong as ever. We have been briefed regularly by our counterparts, but also our peace delegations and peace team are in touch with different representatives of Taliban through unofficial channels. What we expect Taliban to leave
the influence of others over them and act as an Afghan and come and engage in direct discussion and accept what President Ghani time and again generously offered them to sit and discuss and to resolve our differences. All right. So I think it's very clear what the Afghan people want. मगर रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा के अंदर, क्या ये जंग बंदी के लिए हो रहे हैं या सिर्फ जो तालिबान को थोड़ी रिलीफ देनी है, जिस तरह उनके प्रिजनर्स हैं उनको वापस करना है, उनको ब्लैकलिस्ट से निकालना है, क्या इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, ये तालिबान का मुतालबा था कि उन्होंने सिर्फ अमेरिकियों से बात करनी है। वो ये कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा अहम मसला अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी है और अमेरिका ही से ये फ़ैसला हो सकता है कि कब तक ये गैर मुल्की फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी। वो कह रहे हैं पहले इस मसले को निपटा लें तो फिर बाद में हम अफ़गान हुकूमत से भी बात कर लेंगे। अब अमरीकियों ने उनका मुतालबा मान लिया, उनसे बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका के भी कुछ मुतालबात हैं। अमेरिका का मुतालबा ये है कि तालिबान अफ़गान हुकूमत से भी बात करें। अमेरिका का ये भी मुतालबा है कि तालिबान जंग बंदी मान लें और अमेरिका ये भी चाहता है कि तालिबान कोई ज़मानत दें कि आइंदा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरह के मुतालबात अमेरिका के हैं जो तालिबान नहीं मान रहे। तालिबान के जो मुतालबात हैं सबसे बड़ा तो यही है कि गैर मुल्की फ़ौज निकलने का टाइम टेबल दे और फिर ये भी कि वो चाहते हैं कि उनके कैदी रिहा हो जाएं, उनके रहनुमाओं के नाम UN सिक्योरिटी काउंसिल के ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए जाएं। वो शरीयत की भी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी 4 दिन से मुज़ाकरात कतर में हो रहे हैं ये बड़े अहम हैं और हम सुन रहे हैं कि काफ़ी यानी अहम मोड़ में गुफ्तगू दाखिल हो गई है। हालांकि ये मुज़ाकरात 2 दिन के लिए थे लेकिन इसको तोसी दी गई है और 4 दिन के लिए आज ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लगता यह है कि कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ रही है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आप वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। एक तासुर है कि UAE से और इस वक्त जो हमें सऊदी अरब से लोन्स मिले हैं वो इसलिए मिले हैं ताकि हम अपना असर व रसूख तालिबान के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उनको मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर लेके आएँ। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही एक लाइफलाइन मिली है इन दोनों मुल्कों से और वो कहा जाता है कि वो अमेरिका की रजामंदी के बगैर हो ही नहीं सकता था? नहीं, ये तो बात मैं नहीं समझता कि 100% ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का बहुत असर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक में, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि सऊदी अरब और उनके दरमियान इख्तलाफात भी हैं। आप यूँ समझें कि सऊदी अरब इसका और UAE और कतर तीनों की ये कोशिश और तीनों का इंटरेस्ट है। देखें, 2 मुल्क तो वो हैं पाकिस्तान के अलावा जिनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप थी तालिबान के साथ, जिन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ था अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत और पाकिस्तान की एक कलीदी हैसियत है। इसलिए इन तीनों का इकट्ठा होना और फिर कतर का शामिल होना, क्योंकि कतर में उनका दफ्तर है, तो अफ़गान तालिबान को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली है कि अगर एक तरफ से प्रेशर आए, जैसे कि अगर सऊदी कह रहे थे कि हम आपकी बात कराना चाहते हैं अफ़गान हुकूमत के साथ और अमेरिकनों के साथ, तो उनका नहीं, हम अभी बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो अब कतर में मिलेंगे। तो मेरा कहना उसमें यह है कि इसको डायरेक्टली आप लिंक ना करें कि इस वजह पाकिस्तान की एक कलीदी अहमियत है। पाकिस्तान ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन की हैं, UAE की और सऊदी अरब में जो हमारा कनेक्शन है वो इतना पुराना है कि जितना आप मर्जी चले जाएं। तो जो सेनेटर लिंडसे ग्रेहम आए हैं उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कहेंगे कि वो पॉलिसी तब्दील करे पाकिस्तान की तरफ से, अगर वो ये रोल अदा करे जो अमेरिकन चाहते हैं, जो पाकिस्तान खुद भी चाहता है, आप भी चाहती हैं, मैं भी, और जनरल बाजवा ने भी जो एफर्ट किए हुए चाह रहे हैं। हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग ये कहते रहे हैं कि अफगान लेड और अफगान ओन्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए, मगर नादिर नादरी साहब, आप पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या रखते हैं? इसलिए चूंकि पाकिस्तान बार बार ये कह चुका है
کہ ہمارا وہ اثر و رسوخ شاید طالبان کے اوپر نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا, اور یہ ضروری بھی نہیں کہ پاکستان کی بات طالبان سنیں. تو what are your real expectations from Pakistan in facilitating these peace talks? What we need is, what we expect from Pakistan, to work faithfully with our government and with our people to end this violence and this conflict. Let me be specific on what Pakistan can do. All right. The Taliban believe that they have sanctuaries that they can exploit and use it and continue using to inflict harm to their own people in Afghanistan and receive military support, financial support, utilize the space that is provided to them, and also to receive medical and other logistical supports from the sanctuaries in Pakistan. Right. The first thing that will change the attitude of Taliban will be for Pakistan to be clear and very, very firm in acting upon those places where they are utilizing it, shrink their space, reduce the financial sources, do not provide arms. رحیم اللہ صاحب, یہ ان کا کہہ دینا کہ جی ہمیں ان کی دوائیاں بند کر دینی چاہیے, ان کی سینکچریز بند کر دینی چاہیے, مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حال ہی میں زلمے خلیزاد یو ایس انوائے جو ہیں وہ جب آئے پاکستان تو پھر ایک طالبان لیڈر کو پشاور میں حراست میں بھی لیا گیا تاکہ مذاکراتی عمل کی طرف معاملات جائے. تو پاکستان تو ایک طریقے سے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. دیکھیں, وہ تو جو واقعہ ہوا تھا, حافظ محب اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا جی, لیکن پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا. اچھا. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ اصل میں گرفتاری نہیں تھی, یہ میرے خیال میں یہ جاننے کی کوشش تھی کہ یہ طالبان کے کیا کہ اگر طالبان جو ہیں مذاکرات نہیں کریں گے, اگر وہ جنگ کو جاری رکھیں گے تو پھر بالآخر ان سے کہا جائے گا کہ یا تو وہ پاکستان سے نکل جائیں جو یہاں پر ابھی تک ہیں. لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ مذاکرات کروا دیے جائیں, پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کرے. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پاکستان نے کروائے ہیں. پاکستان یہ بھی انہوں نے کوشش کی, آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسلام آباد میں بھی ایک ملاقات ہو جائے. جی بالکل. لیکن دیکھیں طالبان نہیں مانے, وہ اس کی کیا وجہ ہے رحیم اللہ صاحب کہ وہ نہیں مانتے کہ جی پاکستان کے اندر اگر وہ رہ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے مانتے کیوں نہیں؟ دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر کتنا اثر ہے. واقعی پاکستان کا اتنا اثر ہے کہ جب ان سے کہیں گے وہ آ جائیں گے, بات چیت بھی کر لیں گے, معاہدہ بھی کر لیں گے. دیکھیں, وہی طالبان جو قطر میں ہیں, پاکستان نہیں آئے لیکن قطر میں زلمے خلیزاد سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں قطر میں. یہ میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات ہیں, ابھی تک ہیں, لیکن یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. اگر طالبان پاکستان کی بات نہیں مانیں گے, پاکستان اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو پاکستان سے نکالا جائے. اگر یہ ہوا اور پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ طالبان کو نکالنا ہے تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں؟ کیا افغانستان کے ذریعے ہی امریکہ تک رستہ جاتا ہے؟ یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خورشید قصوری صاحب ابھی بھی جب یو ایس انوائے پاکستان آئے زلمے خلیزاد تو انہوں نے یہ کہا اور ٹویٹ بھی کیا, وی آر ہیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن ود مور اسٹیپس بائی پاکستان کمنگ دیٹ ول لیڈ ٹو کانکریٹ ریزلٹس. اگر ابھی بھی اتنے دباؤ کے بعد بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اور سٹیپس لینے چاہیے, تو آپ نے تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں کہ ان کی ایک تھنکنگ کیسی ہے. وہ کون سے ایسے قدم ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں لیے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لیں؟ میں نہیں سمجھتا بحیثیت سابق وزیر خارجہ کہ حکومت پاکستان نہیں چاہے گی یا افواج پاکستان نہیں چاہیں گے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں. اور میں رحیم اللہ صاحب سے اس بات میں اگریمنٹ میں ہوں کہ اگر یہ سچویشن کمپیل کر دیں طالبان پاکستان کو تو پاکستان کے لیے واقعی مشکلات پیدا ہوں گی, پاکستان کو واقعی
मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि देखें ये हमारा कहना है कि वो लड़ते यहाँ से नहीं, उनको यहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास वहाँ बहुत एरिया है कि बहस ये है कि 50% एरिया या 60% है, यहाँ तो बल्कि उनके रास्ते में मुश्किलात हायल हैं, दीवार बनाई जा रही है, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल एक तो यहाँ रेफ्यूजीज हैं, फिर उनके घर वाले रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, तो पाकिस्तान को कहा तो जा सकता है इम्कानी तौर पर कि जनाब आप जो कर सकते हैं करें, अब क्या करें, मिलिट्री एक्शन ले। और कहा वो लोग हैं, वो लोग कोयटा में हैं, पेशावर में हैं, आगे हमारा मुल्क बड़ा डिस्टेबलाइज हुआ है। तो मैं ये इसलिए समझता हूँ कि अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये अंदाज़ा लगाना चाहिए, और अमेरिका की हुकूमत शायद ये लगा चुकी है कि पाकिस्तान वाक़यतन कोशिश कर रहा है। नंबर 2, अगर वाक़यतन पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब, यूएई और कतर यही कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि तालिबान के सामने, और चीन भी यही चाहेगा, कोई रास्ता रह जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग। अगर अफगानिस्तान में ये बात ठीक है कि अफगान हुकूमत वहाँ अमन कायम नहीं रख सकी और तालिबान अपनी रिट बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ तालिबान को भी ये पता है कि वो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकते, ना बैनुल अक़वामी बरादरी उनको सपोर्ट करेगी और अफगान कौम डिवाइड हो जाएगी। मगर कसूरी साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अगर हम तालिबान के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो क्या इसका भी खदशा है कि हम उनको नाराज कर देंगे? और फिर बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि तालिबान को नाराज करे, चूंकि अगली हुकूमत का वो बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मसला है ये, अफगानिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए, ये पाकिस्तान को डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सियासी जमातें, इतराज करने वाले ये कहते थे कि जी फौज जो है और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं। मैं ये मानने को नहीं तैयार। अभी जो जनरल बाजवा की रीसेंट दौरे हैं गल्फ कैपिटल्स के, बीजिंग के, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये लोग आते ही ना, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की लीजा कर्टिस हैं। I get your point. Now, moving forward, Nadir Nadri, you heard the former foreign minister. Now, he says that the civilians here in Pakistan and the military here in Pakistan is on the same page. They don't really want the rise of the Taliban. But if there is going to be withdrawal of troops and 7,000 troops from America are going to leave, what effect will it have on the fighting there in Afghanistan? Because there's a perception in Pakistan that the Taliban will then stand to gain a lot of the territory in Afghanistan. Well, that perception, Muniza, is not correct, because currently the 10,000 plus or the 14,000 international troops are only having the role of an advice and train. They're not fighting our fight. It's our forces fighting with the Taliban. Yes, Taliban are cowardly blowing up a truck here or a suicide attack of killing civilians there. That, of course, creates a level of insecurity, a significant level, but that's only through means of terrorist acts, of suicide attacks that happens anywhere. For us, for our government, completely understand some legitimate concerns and interests of Pakistan, and we have always been very open to put them on the table and discuss them very frankly. But there are some other expectations that our government understands that Pakistan can deliver. We have intelligence that suggests if Pakistan do the three following things, while they would not lose their asset as Taliban, but they will be able to help the peace process through that to proceed. First, to put a sanction on finances of the Taliban, not only to provide the clandestine and covert financial support through the government channels, but also to stop financial supports that are coming through the different donations and charities or whatever from other countries. Second, a second point that is critical to happen, to make sure that intercept the free communication and movement of Taliban that are happening in Quetta, Karachi, and Peshawar. And then third, to act upon some of the key leaders to put a sanction on their free movement and travel between provinces, but also into putting pressure on them
to join a peaceful But solution Nadir, of that this has crisis. happened to a certain extent, hasn't it? No. Unfortunately, when you look at when we intercept the level of communication that are happening in Quetta, in places like Satellite Town, or in Karachi, or in Peshawar, it is significant and appalling on some extent. When there is a wave of violence coming to Afghanistan, prior to that, a free movement from the places and the different line points that Taliban groups and their logistics and their military supplies that are freely moving is also appalling. आपको याद होगा कि एक बार ये फैसला हुआ था, अमेरिकी बीच में आए थे और ये फैसला हुआ था कि ये अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तानी और अफ़गान हुकाम जहाँ जहाँ पे इत्तलाआत हैं कि वहाँ पे इनके महफूज पनाहगाहें हैं, सेंचुरीज़ हैं, तो उसका जायज़ा लेंगे, अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान ने मान लिया था और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ थी क्योंकि इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन फिर ये है कि अगर आप जो है जॉइंटली मुश्तरका वहाँ पे जाएं, छापा लगाएं, वहाँ इंस्पेक्शन करें, तो मेरे ख्याल में वो नहीं हो पाया। मेरे ख्याल में ऐसी एक कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। ये जो देखिए पिछले साल जो ये फैसला हुआ था कि जो ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, उसमें भी ये बात थी ना कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन करेंगे। ये वर्किंग ग्रुप्स का बड़ा अच्छा आइडिया था कि जो भी शिकायत होगी तो वहाँ पे उसके ऊपर बात होगी और फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो वो कोशिश जो है वो अभी तक चल रही है। वो वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं, उनके 2 इजलास भी हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उससे जो तवक्कुआत हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये सारा काम जो है ये मुश्तरका तौर पर करना है। अफ़गानिस्तान इल्ज़ामात लगाएगा, पाकिस्तान इनकार करेगा, पाकिस्तान भी इल्ज़ामात लगाता है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत नहीं मानती। लेकिन देखें पाकिस्तान का जो तालिबान के ऊपर असर है वो तो आपने देख लिया, यानी उन्होंने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। अब इससे आगे जाकर बातचीत तो हो रही है, उसमें शायद कुछ बात आगे बढ़ी भी है कतर में, लेकिन अब ये है कि जो अगला मरहला है, जो पाकिस्तान का मुतालबा है कि तालिबान जंगबंदी भी करें और अफ़गान हुकूमत से बात भी करें। अगर पाकिस्तान ने ये काम करवा दिया तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान की जो इसमें एक अहमियत है और कोशिश है उसको मानना चाहिए। कसूरी साहब, आपने रहीमुल्लाह साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि जी वर्किंग ग्रुप्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, ताकि ये जो ब्लेम गेम है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये ख़त्म हो। क्या वजह है कि हमारे जो सफारतकार हैं वो नहीं कर पाए या हमारे सियासतदान इसमें फेल हो गए हैं? देखिए बात यह है कि जहाँ तक मामला है, एक इसमें लेवल ऑफ ट्रस्ट है। पाकिस्तान ने कई मरतबा कहा, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, ये अपने दौर में भी और मेरे जाने के बहुत बाद भी, कि अब अमेरिका जब रिसेंटली भी कह रहा था पिछले साल डेढ़ में कि जनाब आप एक्शन लें, तो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कई मरतबा कहा था कि हम तैयार हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के। ये हम नहीं कर सकते कि हम पेशावर पर चढ़ाई कर दें या क्वेटे में वहाँ बहुत पाकिस्तानी हैं और वहाँ महाजरीन हैं। तो आप इंटेलिजेंस बेस्ड अगर बताते हैं कि ये वेग सी बात कि जी वो क्वेटे में बैठे हुए हैं, अगर आप कहते हैं जी फला जगह कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार था इंटेलिजेंस बेस्ड कोऑपरेशन। और मैं हर उस चीज़ के हक में हूँ, जैसे रहीमुल्लाह साहब भी कह रहे थे, आप भी उससे एग्री कर रही हैं, जिसमें लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़े। अब ये है कि अब क्योंकि अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, इंडिकेशन दी है, उसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि तीनों पार्टीज़ को पता चल गया है, पाकिस्तानियों को, तालिबान को और अफगान हुकूमत को, कि जल्दी को फैसला करें। प्रेसिडेंट ट्रंप पे एतबार नहीं किया जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर वो बगैर किसी सेटलमेंट के निकले तो अफगानिस्तान को तो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान को भी बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। इधर हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के अमूर पर। नादिर साहब, यू हैव हर्ड व्हाट खुर्शीद महमूद कसूरी was saying and Mr. Rahimullah Yusuf Zai was saying, but he had a good point. He said
that how come these working groups have not really worked out so that there can be an end to the blame game between Pakistan and Afghanistan? Why the working groups didn't work? First, there hasn't been ever a working group at a level that really genuinely look into these issues. Through the quadrilateral discussions that we really was hoping that our counterpart in government of Pakistan will work together to deliver. There have been very clear benchmarks that were committed, the three parties, the government of Pakistan, government of Afghanistan, and also our two international partners, China and United States. Unfortunately, some of the key elements of those roadmap and the benchmarks as part of the agreements of the quadrilateral were never fulfilled. These were as easy as government of Pakistan to work with key mullahs in Pakistan to issue a fatwa against any provocation of jihad in Afghanistan. Well, that did happen. That did happen in Pakistan. There was a proclamation of fatwa. But that's a different one. We had a list of clear individuals who we do understand that government of Pakistan have influence over, but they're also the key mullahs who issue fatwas in places where Taliban does follow. Those individuals did not join that proclamation. Now, these were the simple issues. On verification of intelligence, we have offered that. We did offer that we do it together. Unfortunately, our Pakistani counterparts then, a year and a half ago, suggested that this is our sovereignty issue. We will not allow either the Americans or the Afghans to join a kind of a raid or operation. That did not happen. We are still for finding ways, as President Ghani says, to settle our differences, and the first thing to do peace with Pakistan over the differences that we have, and then to jointly work to end this conflict. When it comes to actions, we see the actions are not being carried out, and we do not get the kind of a result through actions, not through word, to build the kind of trust that's required between us to move forward. Despite all of this, our government has continuously reached out to prime ministers in Pakistan, including very recently, a week ago, this phone conversation with Prime Minister, the current Prime Minister, Mr. Imran Khan, and also with the Chief of Army Staff. And this has been an open door, an open invitation all the time from government of Afghanistan that we need to begin the actual work of building peace. All right. Khurshid Mahmood Qasuri Sahab, I think you heard what Nadir Nadri had said. Now he has listed in detail, उन्होंने बहुत सारे नुकात सामने रखे हैं जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने थे, जिसके ऊपर पेशरफ्त होनी थी मगर नहीं हुई. फतवा से लेके मेरा ख्याल है रेड्स तक उन्होंने बात की है. हम समझते हैं कि हम यहाँ पे अफगान ओन पीस प्रोसेस चाहते हैं. मसला कहाँ है? अगर हम माजी में जाएंगे तो सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जो पाकिस्तान पे हमले हुए हैं, हम भी कहते रहे हैं यहाँ से, उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई आप उनको रोकें, आगे की बात करें. और आगे हमें मानना चाहिए कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा. मैं तो खुदा ना करे ये नहीं कहना चाहता, नाउ और नेवर. ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त. सूरी साहब का ये कहना कि अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नाउ और नेवर मोमेंट है. मगर तालिबान से जब बात की बीबीसी ने तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हुकाम की नीयत पर भरोसा नहीं है, चूंकि अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तालिबान ग्रुप के उस हिस्से का साथ दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है, बजाय इस धड़े को जो तालिबान के कतर में मौजूद सियासी दफ्तर का नुमाइंदा है. तो तालिबान की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड बी टॉकिंग टू द राइट पर्सन, टू द राइट ग्रुप. उनके अंदर भी धड़े हैं. तालिबान के बारे में ये हमेशा से कहा गया कि इसमें धड़ेबंदी है. यकीनन धड़ेबंदी होगी और हम सही धड़े से बात नहीं कर रहे. वो तालिबान का कहना है कि हम सही धड़े से बात नहीं कर रहे. देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो तालिबान का सियासी कमीशन दफ्तर है कतर में जी, हम सुन रहे हैं कि उसमें तब्दीलियां भी होने वाली हैं. उसमें अमेरिका के मुतालबे के ऊपर अहम लोगों को, शूरा के अरकान को शामिल किया जा रहा है.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمائندگی کا لیول جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا اور وہ فیصلہ سازی کر سکیں گے. دیکھیں یہ ایک امریکہ کا مطالبہ رہا ہے, شکایت رہی ہے کہ سیاسی کمیشن جو ہے طالبان کا جو قطر میں ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, تو میرے خیال میں اس کو با اختیار بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ طالبان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, دڑے بندی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے سال عید الفطر کے موقع پر جو 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان طالبان نے کیا تھا اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوا تھا, کوئی دڑے بندی نظر نہیں آئی تھی. تو یہ شاید ٹھیک ہے, مختلف دڑے ہوں گے, مختلف کمانڈر ہوں گے, لیکن پھر ان کے ہاں ایک جو اصول ہے وہ امیر کی اطاعت ہے. The reference to the ceasefire should be looked in this way. The president of Afghanistan, as commander-in-chief, issued a ceasefire unilaterally on Eid al-Adha last year. That was respected throughout the country. 380,000 Afghan forces did not shoot a single bullet. And the people and the public engaged in kind of celebrating this ceasefire and then encouraged the Taliban also to join that. Right. It has become more of a local-driven initiative. But it brings me to my last question, really, Nadir, and this is a very important question to answer. What about the women in Afghanistan? If the Taliban are in some kind of a power-sharing agreement again, what will happen to the rights that they have gotten? Will they be rolled back? Has Afghanistan society come too far to roll back? To roll back on the gains that has been made in the past 2 decades, that is something that the majority of Afghan people would not be ready to give up. Now, on key issues related to not only women's rights, but the key issues related to the entire rights and freedoms of our citizens, so greatly our political freedom that our people are enjoying. All of those are something that people will stand for it, and a peace will not be lasting. And you're quite confident that in these peace talks, these will be some of the issues that will be on the table and will be non-negotiable. Absolutely. 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 All right. What President Ghani said, that engaging in peace is unconditional, but the peace itself will not be unconditional, and those conditions are defined by the sets of rules, including the constitution of the country itself. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. خدا حافظ.